Uh, एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ सुहेल। जब भी डायरेक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स मेरे लिए गाना करते हैं तो उनके दिल में कोई एक आई थिंक कुछ रेपुटेशन सी बस गई है कि मेरे गाने अच्छे हैं, जो ऑब्वियसली मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है। सो दे ऑलवेज वर्क, आई वोंट से हार्डर, आई थिंक एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, बट आई थिंक दे जस्ट हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट फॉर सॉन्ग्स फॉर मी। सो आई रिमेंबर ये गाना हमने आखिर में किया और जब भी इम्तियाज़ ने दादा से बोला तो दादा ने यही बोला, आप फिक्र मत करो, ये गाना तो मैं कर लूँगा। सो आई थिंक इट्स जस्ट कम आउट ऑफ लव। एज वी स्पीक ऑल्सो वी आर स्टिल डूइंग दिस सॉन्ग फॉर द फिल्म। अभी भी चल रहा है इस पे काम, बट आई थिंक आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट द म्यूजिक डायरेक्टर्स, द राइटर्स, द डायरेक्टर हिमसेल्फ, दे रियली लुक एट मी with lot of love when a love song comes. And like I was telling, जो मेरे सामने जो मेरी महबूबा है जिनसे मैं प्यार करने लगता हूँ फिल्म में, वो इतनी खूबसूरत हैं कि बाकी काम बहुत आसान हो जाता है। जस्ट टू एक्सप्रेस अ सॉन्ग लाइक दिस, सो वेल रिटन एंड सो वेल कोरियोग्राफ्ड एंड थॉट ऑफ। Anushka, Extremely easy. You know, he has a lot of genuineness. If you see this song, his eyes have a lot of genuineness when he looks at you in love. So whatever he's saying कि बगल में कौन सी लड़की है, सामने कौन सी लड़की है, वो देख के मैं रोमांस करता हूँ. But in my opinion, Shahrukh can romance this mic also. And look at the mic with the same kind of love. He would look at the most beautiful woman in the world. As long as you're holding it, I can romance it. Otherwise, no. So it is very easy and it's beautiful for me. I mean, to do a film with him in which I'm doing a romantic film with him and to shoot a romantic song with him, it's a great feeling inside. It feels very good. And then to see it on screen and then Preetanda ka gana itna अच्छा music दिया है. The song is so beautiful. The lyrics are so amazing. इरशाद कामिल ने जो lyrics लिखे हैं मुझे बहुत बहुत पसंद है. Like मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है गाना, बहुत ज़्यादा. एक्चुअली इम्तियाज़ ने जब ये कैरेक्टर लिखा था, आई थिंक नॉर्मली डायरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी में से कुछ हिस्से, एक्सपीरियंसेस या सोच या समझ निकाल कर कैरेक्टर लिखते हैं. और मैंने पहले भी बोला है एंड आई विल से इट अगेन, आई थिंक इम्तियाज़ जो हैं कोई भी स्टोरी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हैं. व्हाट अ गर्ल वुड फील एंड व्हाट वुड अ गर्ल लाइक अ कैरेक्टर और एन एक्टर और अ मैन टू बी लाइक. And I kind of, मैं उससे इस बात में बहुत, how do I say, I kind of agree with him emotionally. So there is a lot of us in different ways, not necessarily the experiences that Imtiaz has had and I have had are similar, but some way there's a lot of us in Harry. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात करते वक्त समझ भी जाते थे बोलते वक्त कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है ना अलग अलग जगहों पे. So I relate to it a lot. Obviously, you know, when you play a character, the space is different, the setting is different. Maybe we've not been there, but somewhere the feelings are quite familiar to me also, as Shahrukh and as Harinder. Thank you. hi Shahrukh. I'm sorry, I don't know the details because I don't look into it. We have a head Gaurav who does that. But I think a lot more this time. Of course, our traditional territories will always be there. Some of the traditional territories for our films are kind of non-traditional, like Germany and all that we release our films in France. I think we are doing a little more in Europe and maybe South America, I've been made to understand, apart from the traditional markets. And hopefully every day as the film release comes closer, I think the new markets that the team with Gaurav heading it and Yash Raj, which is distributing it for us, is looking into it. I don't know the exact screen count, I'm sorry. I can find out, but right now I don't know. Thank you. And It's 220 okay. approx. Because the rolling title is still, you know, being done, so it will be a little plus or minus, but you can expect it to be around 220. And yes, we got a UA from the committee without cuts, and we are very happy with their judgment. It's a nice question, Josh. thank you. It's all three of them. This is okay. See, I'll tell you honestly, मैंने कल देखी है फिल्म, अनुष्का ने भी देखी है, इम्तियाज़ हर रोज़ देख रहे हैं. I think most of the team here has seen it. You actually, when you reach this stage of filmmaking, because we are all so involved in it,
I think Anushka, not only as an actor, as a friend, also somewhere at the back of her head, being a producer herself, Dada, because day and night we are sitting there. Imtiaz, of course, has to be the most involved, and he is, round the clock. I think you lose objectivity, you know, when you're so close to it. So it's like your baby. I mean, if you ask me, is Abram more beautiful than we think he is? I'd say yes. But that is a bias, and that's how we all believe about the film right now. It's our baby. It is more beautiful than anything in the world, and God forbid, if it is not as beautiful, it'll be even dearer to us because we love it so much. So for us to be able to say it openly, मैं मार्केट के अंदर आके बोलना शुरू करूँ, सुपर हिट पिक्चर है, मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, पागल हो जाएंगे लोग, एडवांस ये है. I don't know. I hope all that happens. I really wish, because we're all into the business also. I really hope to God. And I really pray. It's a very simple love story. I hope a lot of people like it. That's the bottom line all of us want. So I don't know if it is better than what it's looking like or it is worse. It's a nice film, yeah. Just like I said, bring your heart along, you love it. गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है. बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी. तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे, और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है. मगर वैसे देखा जाए, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे. तो होपफुली आप भी उतना ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. मैं कंट्रोवर्शियल बात बोलूं, आई लव मेकिंग लव, आई डोंट लाइक वॉचिंग इट. अच्छा है ना ये, हाँ, कि मुझे मेकिंग लव इज हैप्पियर देन जस्ट वॉचिंग इट. तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं करता हूँ. But then do you think it always acts in your favor? It never goes wrong, and probably with Harry with Sejal too. तो क्या प्रॉब्लम है, करने दो ना मेरे फेवर में. अच्छा ही है ना अगर लोग प्यार कर रहे हैं. बट जेन्युइनली मैं बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट कि आई डोंट लाइक लव स्टोरीज. आई थिंक थोड़ा मिस इंटरप्रेट है. इट्स जस्ट दैट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई एंजॉय कॉमेडी मोर बिकॉज आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ बॉय. तो मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगता है. लव स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ माई डॉटर नाउ. ऑल ऑफ देम. वो क्या है, 21 days, 27 ड्रेसेस, 13, सब चीज़ें देख चुका हूँ मैं, और मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं. एंड आई जस्ट टेल यू अ मोमेंट, मैं यही गाना कर रहा था, एंड फॉर मी द मोस्ट टचिंग मोमेंट ऑफ द फिल्म इज़ कि मैं कर रहा था तो इम्तियाज़ ने कट नहीं कहा. एंड आफ्टर आई फिनिश सिंगिंग एज मच एज आई रिमेंबर, जस्ट लाइक दादा, the lyrics as many as I could remember, Imtiaz came and shook my hand and he said, you know, it's really nice, आप अभी भी प्यार वैसा ही करते हो जैसे आपने शुरुआत की थी. It's really nice to see you like that. I feel these things. I genuinely do. It's not that I'm acting it out. Of course, I feel being bad also in movies. I feel being other scenes also. But I guess something just works in this. By some chance, some of the films that I've done, which have been love stories, have done so well. And people have loved them for so many years. I think एक ऐसा माहौल सा बन गया है. I like it. I love doing love stories. मुझसे उस दिन हम जब फिल्म शूट कर रहे थे, अनुपमा चोपड़ा ने पूछा था कि आप अगेन लवर बन रहे हो. I am no longer a lover. I am love. I genuinely feel that in a good way. I'm not being pompous. I am love. I feel it. I understand. I like to analyze it. I like to sense it. And somehow that comes through, I guess, in the movies. And I'm very fortunate that you have a director like Imtiaz. You have an actress like, because I'm very shy. So if you have a friend like Anushka with you, it helps open up. You have music directors and composers who are giving it so much more than I can perhaps bring to the table. So it's a fortunate effort of my team. I think they also like making love. They just don't say. I'm sure we all too. What's the news about that? Dada and him have collaborated. मैं LA में था, मैं सुनकर आया, और I think it's just been given its final touches now. अभी वो हो गया है, तो Dada will tell you about it. Well, that song is going to come next, and it's a very exciting song because Diplo का एक track था Pinchers Agony बोल के, the instrumental, the drop was very very exciting. इम्तियाज जब वो drop सुना तो बोला कि we want to use that in the film, in that track. Then I composed on that track, and then after the
then Irshad Bhai wrote his favorite line, "Pur." So, and the "pur" works very well with the drop because you know it's so much to the film, and also it has a lovely sound and ring to it. So after doing that, after the composition, Mohit dubbed, and then we sent the entire dubs back to Diplo, and again he produced it and again sent it back. So there's a collaboration in like it should happen going on. We are just going up and down on tracks, and I'm very, very happy to collaborate with Diplo and the song comes in a place which is, I don't know if I'm saying the right word, but coming of age, feeling of freedom. As a matter of fact, the direction that Imtiaz had given us during the song, it's basically a song about Anushka's character flying free, coming of age, realizing that there is more to life than she has experienced, and it's like a flight she takes off. हमको बार-बार इम्तियाज़ बोलते थे, it's like बेहोशी का आलम, मदहोश हो जाए जब आदमी. So I think that's what it kind of signifies in the film. And फुर I think उड़ने को बोलते हैं, हवा में फुर हो जाता है. So she's flying. बहुत बहुत interesting गाना है, और मैंने छोटा सा वीडियो के अंदर पार्ट भी करके आया हूँ ये वाली स्टेप.